In this video, I am giving information about common otter, a semiaquatic mammal, regarding its diagnostic and morphological characteristics, distribution, habitat, and behavior and ecology, including diet, breeding, and conservation status. Um, Common otter is a semi-aquatic mammal native to the Eurasia and Maghreb, means Maghreb comprising the western and central northern Africa, including the Algeria, Libya, Monaco's countries. And it is also known as the European otter, Eurasian river otter, and cold world otter. These are the names of the common otters. And the most widely distributed member of the otter belong to the subfamily Lutrinae, and of the family whistle means Mustelidae, and it is found in the waterways and waterway of the rivers and and coasts of the Europe and many parts of the Asia and parts of the northern Africa. And the otter has a diet mainly of the fish and strongly territorial, means connected to the line or area of the sea, and it is listed near threatened on IUCN red list. Regarding about its characteristic, the otter is they look brown above and cream below in color, and these long slender creatures are well equipped or well adapted for their aquatic habits, and their bones show the osteoclerosis, and this otter differs from the North American river otter by its short neck and broader vessels and the greater spaces between the ears and the longer tail. And this species is 51 to 95 centimeter long, and with a long tail 35 to 45 centimeter, and the female otter is shorter than the male, and the otter's average body weight is 7 to 12 kilogram, and although occasionally a large old male may reach up to the 17 kg, and the common otter found throughout the India and in the northeast states in Arunachal Pradesh and hilly especially states, and elsewhere it is its distribution is worldwide, and they are most widely distributed in its range, including the parts of the Asia, and Northern Africa, as well as across the Europe, and it prefers open areas of the streams and also live along the coast in the salt water, but requires regular access to fresh water to clean its fur. Now, behavior and ecology. The otter's diet mainly consists of the fishes, and during the winter and in colder environment, it also feeds on the amphibians, crustaceans, and insects, birds, and sometimes small mammals, including the European beavers. And breeding, regarding its breeding, Eurasian otters are the territorial and living alone for most part of the life, but most part, and an individual's territory may vary between about 1 to 40
kilometer long, with about 18 kilometer being usual. And the length of the territory depends on the density and food availability and width of the water suitable for the hunting. So these are the important features. And Eurasian otters uses its means common otter uses fishes called sprints to mark its territory, and mating takes place in water. Uh, Generally, otters are non-seasonal breeders, and male and female will breed at any time of the year. However, the otters population decline across the its range and globally also due to the pollution and habitat loss and hunting. It is listed endangered in the Pakistan and India and Bangladesh, Myanmar and Thailand, but critically endangered in the Mongolia, and it is listed near threatened by the IUCN Red List. And as per the Wildlife Protection Act, it is listed in the Schedule First, and it is also listed in the CITES Appendix First. उदबिलाव एक लुट्रनी उपपरिवार मीन्स सब फैमिली में क्या है, मांसाहारी स्तनधारी है। इसमें इसकी 13 मौजूदा जो हैं उदबिलाव की प्रजातियां हैं, यानी 13 सब स्पीसीज में से सभी अर्धजलीय यानी सेमी एक्वाटिक और जलीय या समुद्री हैं। इसकी जो उटर्स की, क्योंकि कुछ कोस्टल समुद्र में मिलती हैं, कुछ जो है फ्रेश वाटर में हैं, और तो जो हैं वो जलीय या समुद्री हैं कुछ। लेकिन जो यहाँ पे फ्रेश वाटर हमारे इंडिया में हैं, जो रिवर्स में मोस्ट ऑफ द रिवर्स में मिलते हैं, तो ये अर्धजलीय हैं, मानी सेमी एक्वाटिक, पानी में भी वो रहते हैं और पानी से बाहर भी रह सकते हैं। जिनका आहार मछली और क्या अकेशुकी जीवों पर आधारित है मेनली। ल्यूट्रिनी मस्टेलिडी परिवार, मस्टेलिडी जो ल्यूट्रिनी एक सब फैमिली है, मतलब सब फैमिली के अंदर जो उटर है, और ये जो है मस्टेलिडी परिवार यानी फैमिली की एक शाखा है, मस्टेलिडी की सब फैमिली है। और यह जिसमें अन्य जानवरों के अलावा जैसे विजल्स, वेजर्स, मिंक और बुलवरीन शामिल हैं। ये मस्टर्डी के इसके जो आसपास के बहुत करीबी जो हैं इसके फैमिली के सदस्य। और उदबिलाव शब्द जो है पुरानी अंग्रेजी शब्द ऑटर से निकलता है। उदबिलाव में गर्भधारण अवधि लगभग 60 से 86 दिन की होती है, और नवजात पिल्ले की देखभाल जो है मादा या उसकी बड़ी संतानियों से की जाती है। और उदबिलावों का शरीर जो है लंबा, पतला और अपेक्षाकृत जो है इसमें छोटे अंग होते हैं, और अधिकांश के पैरों में नुकीले पंजे होते हैं। और समुद्री उदबिलाव को छोड़कर सभी की पूंछें लंबी होती हैं और मांसल होती हैं। 13 प्रजातियों का वयस्क का आकार इसमें 0.6 से यानी 0.6 मतलब 0.6 से 1.8 मीटर तक लंबाई का होता है, और 1 से 45 किलोग्राम तक वजन उनका होता है, वेरी करता है प्लेस टू प्ले। और एशियाई छोटे पंजे वाला उदबिलाव जो है सबसे छोटी उदबिलाव की प्रजाति है, और विशाल उदबिलाव और समुद्री उदबिलाव सबसे बड़े होते हैं। समुद्र में मिलने वाले वो बड़े होते हैं ज़्यादातर। उदबिलाव की कई प्रजातियां ठंडे पानी में भी रहती हैं। उन्हें गर्म रखने में मदद करने के लिए उच्च चयापचय दर होती है उनमें। और अधिकांश उदबिलावों के लिए यानी कि ओटर्स के लिए मछली उनके आहार का जो है मुख्य हिस्सा है, और इसकी पूर्ति अक्सर पूर्ति करने के लिए जो है ये कभी कभी मेंढकों यानी फ्रॉग्स और कोफिस और केकड़ों द्वारा की जाती है।
कम से कम जो है 1700 के दशक से ऊदबिलाओं का जो है उनकी खाल के लिए शिकार किया जाता रहा है। और ऊपरवार ल्यूट्रिना की कई